saw some more drama. This time a direct face-off between Speaker Om Birla and the Congress's leader of the opposition, Rahul Gandhi. The Speaker claimed that the leader of the opposition was not observing the decorum of the House, did not allow Rahul Gandhi to speak, and instead adjourned the House. Rahul Gandhi hit back, saying that the Speaker is silencing him and not giving him an opportunity to speak on multiple occasions. It has sharply escalated now into a bitter face-off between the Speaker and the leader of the opposition, with 70 Congress MPs reaching the door of the Speaker, claiming that the opposition is not being allowed to speak in the Lok Sabha. Is Rahul Gandhi being gagged, or is he protesting too much? Take a look. आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। Lok Sabha Speaker Om Birla ticking off members, especially the leader of opposition, right before he adjourned the House on Wednesday afternoon. The Speaker, however, did not mention what prompted him to reprimand the member. Congress MP Rahul Gandhi wanted to speak but did not get the opportunity. सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 70 Congress MPs met the Speaker and registered their objection. A little later, Rahul Gandhi, speaking to the media, accused the Speaker of not allowing him to speak. After he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the House, frankly. I mean, literally, Speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, unsubstantiated. आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए, और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी. Rahul Gandhi claimed it was the Speaker who wasn't following convention. देखिए, मुझे हाउस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है. जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता. ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है. जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते. आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें. Though the Speaker Om Birla did not mention the reason for his displeasure, the BJP shared this message on social media, highlighting an exchange between Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें. The budget session of Parliament has been relatively productive, with no major disruption so far. So is the face-off between the leader of opposition and the Speaker just a storm in the teacup? Bureau Report, India Today.